Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And good morning and good evening to all the participants from different regions of the world. We welcome you in the IEEFA's report launch event hosting by Indus Consortium and Pride. The report's title is Rising LNG Dependence in Pakistan is a Recipe for High Costs, Financial Instability and Energy Insecurity. आप सबको इंडस कंसोर्शियम, ग्रो ग्रीन नेटवर्क और प्राइड की जानिब से सलाम और खुश आमदीद। आज आईफा की जिस रिपोर्ट की लॉन्च है उसका उन्वान है पाकिस्तान में कुदरती माए गैस पर बढ़ता इन्हिसार, माली अदम इस्तेहकाम, तवानाई का अदम तहफ़्फ़ुज़ और महंगाई। प्रोग्राम के बाज़ाब्ता आगाज़ के लिए मैं गुजारिश करती हूँ इंडस कंसोर्शियम के सीईओ मोहतरम हुसैन जरवार साहब से कि वो अपने तारुफी कलमात कहें और इंडस कंसोर्शियम का तारुफ भी पेश करें और आज के इस वेबिनार का जो मकसद है वो भी आपके साथ शेयर करें। ओवर टू हुसैन जरवार साहब, सीईओ इंडस कंसोर्शियम, टू वेलकम यू ऑल। Thank you, Fiza. Am I audible? Yes, very much. Clear and loud. Thank you. Good morning, good evening, and good afternoon to all of you, because we have joined friends across the world. On the behalf of Indus Consortium and Pride, I am pleased to welcome all of you in today's webinar. As you all know that IEEFA is a global think tank which has been engaged in energy economics related research, and I think they have done a lot of researches previously and producing evidence for the campaigners who are demanding for the fossil fuel phase out in globally as well as in Pakistan. So I'm pleased that this LNG economics report will strengthen our arguments, especially the campaigners who are campaigning against the fossil fuel projects in Pakistan, and will provide an opportunity to negotiate and to present that argument on policy level forums as well as with the banks and also the companies who are engaged in this LNG related energy projects in Pakistan. So this is a very good opportunity. The author of this report are the Sam Reynolds and the Hania Saad from the IEEFA. After the completion of 30 minutes presentation, we will open the floor for Q&A and also the comments and feedback. Please feel free to ask questions and comments to our authors of the report. You can paste your questions into the chat box. Then Hania and Fiza will bring those questions to our researchers. And I'm again welcoming you all into this webinar. I will also welcome to our friends in Urdu language. जितने भी पाकिस्तान से हमारे साथी आए उनको मैं खुशामदीद कहता हूं। आज की इस रिपोर्ट लॉन्च में हमारे साथ मुख्तलिफ ममालिक से भी दोस्त जो है वो ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर चुके हैं। तो उन तमाम साथियों को, आप साथियों को आज के इस वेबिनार में मैं इंडस कंसोर्शियम और प्राइड और आईफा की तरफ से वेलकम करता हूं। हम जितने भी यहाँ पे फॉसिल फ्यूल के प्रोजेक्ट्स या डर्टी सॉरी, मुझे लगता है कि हुसैन, चूंकि हुसैन जो है he is right now in Cambodia. हुसैन आप डिसरप्ट हो गए थे, प्लीज कंटिन्यू सर। जी, उसको सपोर्ट करेगी। तो यह है कि आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि ये आईफा की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है पाकिस्तान के बारे में, उसको आप गौर से सुने और आपके कोई सवालात हों और आपके कोई कमेंट्स और फीडबैक हों तो आप चैट बॉक्स में वो डाल सकते हैं। फिर जब आपको हनिया या फिजा में से वो इनवाइट करेंगे या आपके सवाल पढ़ेंगे और यहाँ पे हमारे जो रिसर्चर हैं वो उनके जवाबात देंगे। तो एक दफ़ा फिर तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया इंडस कंसोर्शियम, प्राइड और आईफा की तरफ से कि आज के इस वेबिनार में, इस रिपोर्ट लॉन्च में आप शामिल हुए। थैंक यू वेरी मच।
Over to you, Fiza. बहुत शुक्रिया हुसैन साहब। बिल्कुल, हम आए दिन तवानाई की कमी और गैस बहरान की बात करते हैं। गैस बहरान सर्दियां आते और भी शदीद हो जाता है। इंडस्ट्रीज, घरेलू सार्फिन और ख़वातीन के लिए मसाइल बढ़ जाते हैं, जबकि तवानाई का बहरान गर्मियां आते ही शदीद से शदीद तर होता चला जाता है। 2015 में जब पहला बरामदशुदा LNG टर्मिनल कायम किया गया था, तो LNG इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट्स में सरमायाकारी को बिजली की पैदावार के लिए महंगे फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल से दूर रहने की दलील के साथ जायज़ करार दिया गया था, मगर आज सूरत हाल उसके बरक्स है। LNG पर पाकिस्तान का बढ़ता हुआ इन्हिसार किस तरह मुल्क के तवानाई के शोबे में तवानाई के अदम तहफ़्फ़ुज़ और माली बहरान को हवा दे रहा है, किस तरह कोविड और यूक्रेन की जंग ने हमारे तवानाई के शोबे को मुतासिर किया है, आज की इस रिपोर्ट लॉन्च वेबिनार में हमारे मुकर्ररीन इस पर ही बात करेंगे। आज ये जो रिपोर्ट लॉन्च होने जा रही है, ये रिपोर्ट आईफा नामी इदारे के 2 तवानाई के तज्जियाकारों सैमुअल रेनॉल्ड्स और हनिया असाद ने तहकीक करके तैयार की है। The Institute for Energy Economics and Financial Analysis, IEEFA, examines issues related to energy markets, trends, and policies. The Institute's mission is to accelerate the transition to a diverse, sustainable, and profitable energy economy. आईफा का इदारा तवानाई की मार्केट, रुझानात और पॉलिसियों से मुतल्लिक मसाइल का जायज़ा लेता है। आज जो मुकर्ररीन हमारे साथ हैं उनमें शामिल हैं सैमुअल रेनॉल्ड्स और मिस हनिया असाद, और वो दोनों एनर्जी एनालिस्ट हैं। The report, Rising LNG Dependence in Pakistan, is a recipe for high costs, financial instability, and energy insecurity, is prepared by the IEEFA's energy analysts Sam Reynolds and Hania Assad. Sam is the author of several studies concerning the region's transition to renewable energy. His work has been published in local and international media outlets around the world. Sam has a master's degree in energy economics and international environmental law from Johns Hopkins University, and he has worked throughout Asia. ग्रो ग्रीन नेटवर्क के साथियों को याद होगा कि एनुअल मीटिंग के दूसरे रोज जो पहला सेशन हुआ था वो सैम ने ही लिया था। सैम ने एनर्जी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की है और वो पूरे एशिया में इस हवाले से काम करते रहे हैं। Ms. Hania Assad is also an energy finance analyst at IEEFA. Based in Pakistan, she covers Asian energy markets with a focus on Southeast Asia and Pakistan. She holds a master's degree in environmental management from the Yale School of the Environment with a specialization in energy economics and policy analysis. ग्रो ग्रीन नेटवर्क के साथ ही हनिया से भी बखूबी वाकिफ होंगे, क्योंकि हनिया पहले भी हमारे वेबिनार्स में स्पीकर के तौर पर शामिल होती रही हैं। हनिया ने अपना मास्टर्स एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में किया है और उनका फोकस एनर्जी की इक्तिसादियात और पॉलिसी का तज्जिया करना है। अब मैं गुजारिश करती हूँ सैम और हनिया को कि वो अपनी प्रेजेंटेशन दें। सैम अंग्रेज़ी में बात कर रहे होंगे और हमारे मकामी साथियों के लिए हनिया साथ साथ उसका उर्दू तर्जमा पेश कर रही होंगी। और जो सारे साथी हैं उनसे भी गुजारिश है कि ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आप लोग अपने माइक्स और वीडियोस ऑफ रखिएगा, और जो भी आप लोगों के सवालात हैं वो काइंडली आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। जैसे ही प्रेजेंटेशन ख़त्म होगी तो आपके सवालात लिए जाएंगे, मिस हनिया ही उसको मॉडरेट कर रही होंगी। सो ओवर टू सैम एंड हनिया। Hi, everybody. Thank you all for those lovely introductions, and thank you to our organizers and to all of our guests here. I'm going to start by sharing my screen. One moment here. So is that working? Yes, it is working very well. Great. Okay. So thank you all again. It's a pleasure to be here. My name is Sam Reynolds. I'm joined by my co-author, Hania Assad, and we're here to present our most recent report looking at the risks of Pakistan's continued LNG build-out.
Many of these risks are playing out right before our eyes in the form of multiple hours of load shedding per day. But at the same time, LNG demand continues to grow unsustainably, and there are multiple new projects in the pipeline. So there's really no end in sight. And this report is an attempt to think about the risks and to start to think about a way forward from this crisis. Assalamualaikum everyone. मेरा नाम हनिया इसाद है. मेरे साथ मौजूद हैं सैम रेनल्ड्स. हम दोनों एनर्जी फाइनेंस एनालिस्ट्स हैं एट IEEFA. और आज की जो हमारी रिपोर्ट है जिसका हम लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे, वो LNG की बढ़ती हुई जो डिपेंडेंस है पाकिस्तान की, उसके इकोनॉमिक रिस्क को देखेगा. कुछ रिस्क तो हमारे सामने ऑलरेडी हम देख सकते हैं. बिजली की गैर फराहमी की वजह से जो लोड शेडिंग है और बिजली की हाई कॉस्ट जो कंज्यूमर्स को बेयर करनी पड़ी है, उसकी फॉर्म में हम कुछ रिस्क तो ऑलरेडी देख सकते हैं. लेकिन इस सब के बावजूद LNG की डिमांड हमें बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है. तो आज हम इस डिपेंडेंस को देखेंगे और इसके रिस्क को देखेंगे. थैंक यू. ओवर टू यू सैम. So I want to start first by looking at natural gas supply and demand. Natural gas demand has nearly doubled since the early 2000s in Pakistan. It accounts for almost half of all of Pakistan's energy needs, and consumption is mainly in the power sector, followed by the domestic, industrial, and fertilizer sectors. बैकग्राउंड के तौर पे हम थोड़ी सी डिमांड और सप्लाई सिचुएशन को अगर पाकिस्तान के अंदर एग्जामिन करें तो ये गलत नहीं होगा अगर हम कहें कि पाकिस्तान एक नेचुरल गैस बेस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियादी एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं उसमें से 50% तकरीबन नेचुरल गैस के थ्रू पूरी की जा रही हैं. और अगर कंजम्पशन साइड पे हम देखें तो पावर सेक्टर इस वक्त नेचुरल गैस का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, जिसके बाद डोमेस्टिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर कुछ और बड़े कंज्यूमर्स हैं. और जो ग्राफ हमारे राइट पे है वो दिखा रहा है कि कैसे हिस्टोरिकली नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ती गई है, और ये डिमांड स्पेशली डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर हमें कांस्टेंट एक इंक्रीज नजर आ रहा है. एक मुसलसल बढ़ती हुई डिमांड डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर दिख रही है. नेक्स्ट स्लाइड. So at the same time as demand is rising very quickly, domestic production has really been declining since about 2012. BP estimates that there are only 13 more years of remaining reserves at the current rate of production. So LNG imports, shown in red, have risen dramatically to compensate. जैसे जैसे हमारी डिमांड हमें बढ़ती नज़र आ रही है, उसी तरह हमारी जो कुदरती ज़खायर हैं पाकिस्तान के पास नेचुरल गैस के अपने डोमेस्टिक रिजर्व्स, उनके अंदर हमें एक मुसलसल रिडक्शन नज़र आ रही है. वो कमी नज़र आ रही है ओवर द ईयर्स. और कहा जाता है कि 2012 में हमारी अपनी जो कुदरती ज़खायर थे वो पीक कर गए थे, प्रोडक्शन पीक कर गई थी पाकिस्तान में. और करंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम देखें सामने तो पाकिस्तान के पास इस वक्त 13 साल के तकरीबन ज़खायर मौजूद हैं. और इसी जो गैप जो क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और एक तरफ सप्लाई डिक्रीज हो रही है, तो जो गैप हमारे पास आता है उसको फिल करने के लिए पाकिस्तान ने LNG इंपोर्ट्स का सहारा लिया है, जो कि 2015 के बाद से हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड. Looking more closely at this LNG, in 2020, Pakistan imported about 7.5 million tons. In 2021, that number is up to 9 million tons. Most of that LNG is coming from Qatar, Nigeria, the United States, and others. The share of LNG in Pakistan's total gas demand rose from 8% in 2016 to 26% in 2020. So more than a quarter of natural gas demand is being met by LNG. Most of that LNG is being allocated to the power sector as well as the industrial sector, but there are much smaller, very important shares being consumed by the fertilizer sector and a growing percent of the domestic sector. पाकिस्तान के अंदर LNG कुछ चंद ममालिक हैं जिनके थ्रू ये LNG इंपोर्ट की जा रही है. मेजर शेयर कतर का है, फॉलोड बाय नाइजीरिया, USA, UAE और कुछ और भी सप्लायर.
2020 کے اندر پاکستان نے 7.4 ملین ٹنز LNG امپورٹ کی تھی، جبکہ کرنٹ ایئر 2022 کے اندر یہ 9 ملین ٹنز تک یہ امپورٹ پہنچ چکی ہے، اور یہ بڑھتا ہوا شیئر ہی ہمیں دکھ رہا ہے۔ 2016 میں جب LNG امپورٹس بالکل نئے تھے پاکستان کی مارکیٹ کے لیے، تب LNG جو تھی صرف 8% شیئر تھی ٹوٹل گیس ڈیمانڈ کا، جبکہ 2020 میں یہ تقریباً 26% شیئر کا حامل ہے جو پاکستان کی نیچرل گیس ڈیمانڈ ہے ٹوٹل۔ اور کنزمپشن سائڈ پہ LNG جو ہے وہ میجرلی پاور سیکٹر کے لیے مختص کی گئی ہے، جبکہ انڈسٹری بھی ایک میجر شیئر ہولڈر ہے LNG کی کنزمپشن میں۔ اور فرٹیلائزر سیکٹر ہمیں اوور دی ایئرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرٹیلائزر سیکٹر اور ڈومیسٹک سیکٹر کی کنزمپشن کا شیئر بھی بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ Here's a map of the existing and proposed terminals. The Gasport and Engro LNG terminals are existing and operating near Port Qasim. The Tabir and Energas LNG facilities are probably the most advanced proposals. Both are aiming for completion in 2024, and both have received key permits and licenses from regulatory groups. Tabir LNG is wholly owned by Mitsubishi, and Energas is owned by a local consortium of companies with a minority ownership from Qatar Petroleum. پاکستان کے ایگزسٹنگ ٹرمینلز کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ہمارے پاس 2 ٹرمینلز ہیں جو پورٹ قاسم کے اندر لوکیٹڈ ہیں، انگرو LNG ٹرمینل اور گیسپورٹ LNG ٹرمینلز۔ یہ دونوں ٹرمینلز کچھ سال سے آپریشنل ہیں پاکستان کے اندر، جبکہ اگر ہم پلان پروجیکٹس کی طرف جائیں تو تقریباً 4 LNG ٹرمینلز ہیں جو اس وقت پائپ لائن میں ہیں، جس کے اندر تعبیر LNG اور انر گیس بڑے ٹرمینلز ہیں، جبکہ ایزی LNG اور ڈیوو گیس ٹرمینلز چھوٹے ٹرمینلز ہیں جو موسٹلی پرائیویٹ آف گرڈ کنزیومرز کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ اور تعبیر LNG ٹرمینل جو ہے وہ متسوبشی گروپ کی ایک سبسیڈری ہے، جبکہ انر گیس جو ہے وہ ایک لوکل پارٹنرز کا مجموعہ ہے جنہوں نے مل کے انویسٹمنٹ ڈیسیجن لیا ہے انر گیس LNG ٹرمینل کے لیے۔ اور دونوں ٹرمینلز 2024 کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ 2024 تک آن لائن آ جائیں، اور اس کے لیے اوگرا کی طرف سے انہیں کافی زیادہ لائسنسز اور پرمٹس بھی حاصل ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ Let's talk about some of the economic and financial risks of LNG. The first risk is that LNG is very unreliable in Pakistan. Pakistan has 4 long-term contracts with suppliers. 2 of those suppliers have defaulted at least 11 times since January 2021. When they default, that means the non-delivery of cargoes, and that can cause severe gas shortages, power outages, and economic harm in various key sectors of Pakistan's economy. کچھ اب ہم جو LNG سے ایسوسیٹڈ رسکس ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا رسک جو ہم اسٹڈی کریں گے وہ یہ کہ LNG کی سپلائی انریلائبل ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت 4 طویل مدت کانٹریکٹس ہیں جن کے تھرو پاکستان LNG پروکیور کرتی ہے، جس کے اندر سے 2 سپلائرز گنور اور اینی جو ہیں انہوں نے جنوری 2021 سے تقریباً 11 بار انہوں نے ڈیفالٹ کر چکے ہیں، مطلب انہوں نے جو ان کی ایلوکیٹڈ اماؤنٹ تھی، جو پرومسڈ کارگو تھے، انہوں نے ڈیلیور نہیں کیے، انہوں نے ہی فراہم کیے، اور اس غیر فراہمی کی وجہ سے پاکستان کو بہت سا مالی بحران فیس کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے گیس شارٹیجز اور انڈسٹریل نقصان ہوا ہے۔ جی اوور ٹو یو سیم۔ So this chart on the right shows the Asia spot price, the international price for LNG in Asia. And if we plot the supplier defaults along this timeline, we can see that supplier defaults really only happen when prices in global markets spike. And that has led to speculation
that supplier defaults are to achieve higher profits elsewhere besides Pakistan. And we can see that under the long-term contracts with Pakistan, this is the price that Pakistan would have paid for the LNG. And suppliers may have resold those cargoes into international markets. Now, the difference between the red dot and the black bar shows the potential profits that the supplier could have made. We at IEEFA estimate that between August 2021 and February 2022, suppliers may have made about $400 million by reselling cargoes elsewhere at the expense of Pakistan's energy security. Now, this is not to confirm or deny speculation, but it's to give a sense of the financial incentive that this may continue to happen in the future. जो हमारे राइट पे जो हम ग्राफ देख रहे हैं, ये एशिया स्पॉट प्राइसेस का ग्राफ है। एशिया की जो ओपन मार्केट है एलएनजी के लिए, उसके अंदर जो प्राइसेस हमें नजर आई हैं, उसका ग्राफ है। और अगर हम इसके ऊपर ओवरले करें जो सप्लायर डिफॉल्ट्स हैं, जो 11 कार्गोज नहीं सप्लाई किए गए, तो वो हम देख सकते हैं कि तब हुए हैं जब ग्लोबल एशिया की स्पॉट प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। इसके मुकाबले में जो ब्लैक बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस थी जो इन सप्लायर्स को मिलनी थी। बट उन्होंने सप्लाई ना फराहम करके, उन्होंने, ये हमारा अंदाज़ा है कि उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट्स में ये जो कार्गोज हैं उनको डाइवर्ट किया है, जहां उनको ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा मुनाफा मिला है। और हमारा अंदाज़ा है कि ये मुनाफा तकरीबन $400 मिलियन तक इनको मुनाफा हुआ है जो सप्लायर्स ने डिफॉल्ट्स किए हैं पाकिस्तान के कार्गोज के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड। The second risk, so not only is LNG unreliable, it's also very expensive. And so here's the average LNG price delivered to Pakistan. It's recently hit $12. If you add on transmission and distribution costs, it's close to 16. It's close to $16. The price of domestic gas in Pakistan averages about $3.50. So LNG on average tends to be about 2 to 4 times more expensive than domestic gas. Now, 50% of Pakistan's LNG comes from the international spot market, which has been very expensive and very volatile. And that's particularly true when suppliers default. Pakistan has to go and institute an emergency tender. And these emergency tenders have yielded prices that are exorbitant, sometimes above $30 per MMBTU. And that's nearly 10 times what Pakistan is used to paying for domestic gas. One cargo at $30 is approximately 100 million US dollars. Yeah. हम अपने अगले रिस्क की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि एलएनजी एक बहुत महंगा फ्यूल है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर एवरेज एलएनजी की प्राइस $8 से $10 पर MMBTU रही है। जब इसके अंदर हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को ऐड करते हैं तो ये $12 से $16 पर MMBTU तक पहुंच जाती है। जबकि पाकिस्तान की जो अपनी कुदरती ज़खायर हैं गैस के, उनकी प्राइस $3.5 से $4 पर MMBTU है। तो LNG जो है वो ऑलरेडी ही एक बहुत महंगा फ्यूल है, 2 से 4 गुना ज़्यादा डोमेस्टिक गैस से इसकी प्राइस है। और क्योंकि पाकिस्तान जो है तकरीबन अपनी 50% जो है LNG जो है स्पॉट मार्केट यानी ओपन मार्केट्स के अंदर के थ्रू प्रोक्योर करता है, तो जो पाकिस्तान काफ़ी महंगी LNG भी खरीद रहा होता है, जब स्पेशली जब डिफ़ॉल्ट्स हो रहे होते हैं लॉन्ग टर्म सप्लायर से। जैसे कि हमने देखा कि 11 डिफ़ॉल्ट्स हमें फेस किए हैं इस गुज़श्ता साल के अंदर। और जब ये डिफ़ॉल्ट्स होते हैं तो फिर PLL जो है वो इमरजेंसी टेंडर्स फ्लोट करता है। और इन इमरजेंसी टेंडर्स के अंदर जो हमने प्राइसेस देखी हैं वो तकरीबन $30 पर MMBTU तक भी गई हैं।
जिसकी जो अगर हम कन्वर्ट करें एक कार्गो का वॉल्यूम, तो ये तकरीबन एक कार्गो $100 मिलियन के एवज हमें पड़ा है. Over to you, Sam. So again, LNG in Pakistan has recently been more than 8 times the price of domestic gas. And global prices are extremely volatile, right? After the Russian invasion of Ukraine, prices hit $60 per unit. These prices are expected to remain very high and very volatile until at least the middle of the decade. So several more years of high prices. In the power sector, when LNG is used as a fuel for power generation, an LNG price of $25 per MMBTU leads to a power price of about 25 to 30 cents per kilowatt hour for just the fuel cost alone. Now compare that to the average power price in Pakistan of about 7.5 cents per kilowatt hour. And we can see that power generated via LNG is about 4 times more expensive than the average power price in Pakistan. So these high LNG prices affect not only LNG and gas users, they also affect electricity users throughout the country. हम देख सकते हैं कि जो LNG पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली प्रोक्योर की है, जो डिफॉल्ट्स की वजह से पाकिस्तान को इमरजेंसी टेंडर्स फ्लोट करने पड़े, तो उसकी प्राइस 8 से 10 गुना ज़्यादा है डोमेस्टिक गैस से. और इसकी जो हाई प्राइसेस है स्पॉट मार्केट के अंदर, उसके पीछे एक और वजह ये है कि जो रशिया की इन्वेशन है यूक्रेन की, उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स के अंदर सप्लाईज इस वक्त कम हैं, जिसकी वजह से LNG की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. और हाल ही में हमने देखा कि तकरीबन $60 पर MMBTU तक ये प्राइस पहुंच चुकी है. और क्योंकि LNG का सबसे बड़ा कंज्यूमर पावर सेक्टर है, तो इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें नज़र आता है बिजली की कीमतों पे. अगर एक कार्गो पाकिस्तान $25 पर MMBTU पे खरीद रहा है, तो इसका अगर हम इससे बिजली बनाई जाए इस गैस से, LNG से, तो इसकी तकरीबन फ्यूल कॉस्ट ही सिर्फ 25 से 30 सेंट्स पर किलोवाट आवर बन जाती है, जबकि पाकिस्तान के अंदर एवरेज जो कंज्यूमर को बिजली फराम की जा रही है वो 7.5 सेंट्स पर किलोवाट आवर है. तो हम देख सकते हैं कि कितना गैप आ जाता है जो गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ता है. Over to you, Sam. So LNG, when LNG prices rise globally, Pakistan's total LNG import bill rises. And we expect, based on our forecast, that this year the total import bill could rise to $5 billion and rise to $32 billion by 2030. That's based on demand scenarios, pricing scenarios. But keep in mind, prices are expected to remain high for at least the next several years, and more likely into the middle of the decade. तो जब LNG की प्राइसेस बढ़ती हैं, इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल पे आता है. और अभी 2022 के अंदर जो 10 महीने अभी तक गुजरे हैं, उसमें ऑलमोस्ट 4 बिलियन ऑलरेडी LNG का बिल हो चुका है. और बाय द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के इख्तिताम तक, ये $5 बिलियन यानी $5 अरब तक ये बिल LNG इंपोर्ट का ही सिर्फ पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा. और IEEFA की प्रोजेक्शंस के मुताबिक ये 2030 तक ये LNG इंपोर्ट बिल ही सिर्फ $32 बिलियन तक पहुंच सकता है. और जो अगर हम प्रोजेक्शन देखें LNG प्राइसेस के लिए, तो तकरीबन 2025 तक ये बढ़ती रहने का इम्कान है. थैंक यू. So LNG is unreliable, it's expensive, but it can also really hurt the economy. And most of you know about circular debt. It's used commonly in the power sector to describe a shortage of cash flows throughout the supply chain. Well, since LNG imports began in 2015, circular debt in the gas sector has skyrocketed to estimates between $3.5 billion to $7.5 billion. The chart on the right shows the money owed to SWE utility companies from the government and consumers. Before LNG imports, the money owed was at reasonable levels, but after LNG imports began, those receivables began to skyrocket.
Now, because money owed was not coming in, SWE companies were unable to repay their LNG suppliers. And so their payables, shown in red and blue, also began to skyrocket. And this has led to defaults. LNG suppliers have defaulted on contracts with global companies. When Pakistan is unable to procure LNG, power goes offline. And it was reported that between December and April, almost 3,500 megawatts of power capacity was offline due to fuel shortages. In December 2021, textile mills in Punjab province were forced to close for over 2 weeks for LNG shortages. And this resulted in a loss of $250 million of exports, or about 20% of the total sector's annual revenue. And the government has even said that there is not enough money left to continue to pay for LNG imports in the near term. रिस्क नंबर 3 क्योंकि LNG एक अनरिलायबल फ्यूल है, एक बहुत महंगा फ्यूल है, इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है जो हमारी इकोनॉमी पे होता हुआ हमें नज़र आता है. सर्कुलर डेट जिसका जिक्र मोस्टली पावर सेक्टर के अंदर होता था, अब गैस सेक्टर में भी एग्जिस्ट करता है. और अगर हम देखें तो जो ग्राफ हमें हमारी राइट पे है, 2015 के बाद से ये सर्कुलर डेट का जो है फिगर ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो SWE यूटिलिटीज़ हैं उन्हीं का नेटवर्क LNG इंपोर्ट्स और ट्रांसमिशन के लिए भी यूज़ होता है. तो जब ये SWE यूटिलिटीज़ जो हैं इनको अपनी रेवेन्यू के जो टारगेट्स हैं ये नहीं मीट कर पाते, ये अपने सप्लायर्स को भी पे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक कैश शॉर्टफॉल क्रिएट हो जाती है सिस्टम में, जिसको हम सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जा कहते हैं. एस्टिमेट्स के मुताबिक ये $3.5 बिलियन से लेके $7.5 बिलियन के बीच में इस वक्त एग्जिस्ट करता है सिर्फ गैस सेक्टर के अंदर. और ये 2015 के बाद से ही हमें ये बढ़ता हुआ शॉर्टफॉल जो है ये नज़र आ रहा है. और इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जब ये LNG इंपोर्ट्स नहीं कर पाती गवर्नमेंट, तो इसका एक इम्पैक्ट हमें डायरेक्ट नज़र आता है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर और पावर सेक्टर के ऊपर. अगर हम देखें हाल ही के अंदर हम इस वक्त 4 से 10 घंटे की लोड शेडिंग का सामना करें पूरे मुल्क के अंदर. और इसके पीछे अगर हम वजूहात देखें तो तकरीबन दिसंबर से लेके अप्रैल तक 3300 मेगावाट ऑफ पावर कैपेसिटी जो है वो ऑफलाइन रही है फ्यूल शॉर्टेजेस की वजह से, जिसके अंदर LNG की शॉर्टेज भी है, कोल की शॉर्टेज भी है, ऑयल की शॉर्टेज भी है, बट एक मेजर चंक जो है वो LNG की शॉर्टेज की वजह से हमने देखा है. और दिसंबर 2021 के अंदर यही सप्लाई शॉर्टेजेस की वजह से जो टेक्सटाइल मिल्स हैं पंजाब के अंदर, उनको सप्लाई कट ऑफ कर दी गई थी 15 दिन के लिए. और इसका जो उनको माली बहरान फेस करना पड़ा था वो तकरीबन $250 मिलियन या जो उनका एनुअल रेवेन्यू है उसका 20% हिस्सा उनको सैक्रिफाइस करना पड़ा था इस गैर फराहमी की वजह से गैस की. One reason that this is such a financial burden is because so much gas is leaked in the network, right? The SWE companies, SWE Southern and SWE Northern, leaked about 17 and 12% of all of the gas in the network in fiscal year 2019. This is far above international norms of about 2%. And so every molecule lost is a molecule of LNG or gas that must be paid for, but can't be recovered. And so it's a major financial burden. IEEFA estimates that the total annual value of this unaccounted for gas to be almost $600 million in 2020. And the charts below show what the Oil and Gas Regulatory Authority allows in terms of leakage rates compared to what the actual leakage rates are. And you can see that SWE companies have exceeded even OGRA benchmarks. And so this is causing a major, as more expensive LNG is added to a leaky pipeline network, the value of unaccounted for gas is only going to rise.
اگر تھوڑا سا ہم ان ڈیپتھ جا کے دیکھیں کہ جو گیس لیکیج ہے جو سوئی نیٹ ورک کے اندر، وہ کیوں اتنا بڑا پاکستان کے لیے کیوں اتنا مالی بوجھ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوئی نیٹ ورکس ہیں اسی کے تھرو ہم LNG امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا گیس پورے ملک میں فراہم کی جا رہی ہوتی ہے. اور جو ہماری اس وقت سوئی یوٹیلیٹیز ہیں، سوئی ناردرن اور سوئی سدرن گیس نیٹ ورکس، اس کے اندر بہت زیادہ اس وقت ان اکاؤنٹڈ فار گیس لاسز ہیں، یعنی ایسی گیس جو اینڈ کنزیومر تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ یا تو وہ چوری ہو جاتی ہے رستے میں یا لیک ہو جاتی ہے. سوئی سدرن کے اندر زیادہ اس وقت لاسز ہیں، تقریباً 17% گیس جو ہے وہ نیٹ ورک کے اندر ہی لوز ہو جاتی ہے، جبکہ سوئی ناردرن گیس نیٹ ورک جو ہے اس کے اندر 12% لاسز اور لیکیجز ہو رہی ہیں. اور یہ انٹرنیشنل نارم سے اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ بہت زیادہ ہیں. انٹرنیشنل نارمز اس وقت صرف 2% گیس لیکیج اور لاسز الاؤ کرتے ہیں. اور اگر ہم اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ، فائنینشیل امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی گیس لوز ہو رہی ہے اس کی اکنامک ریکوری کوئی نہیں ہو پاتی، اس کی کوئی جو سوئی یوٹیلیٹیز ہیں ان کو اس کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا. اور آئیفا کے مطابق جو اب تک 2020 کے اندر جو لاسز ہوئے تھے وہ تقریباً $550 ملین کی قیمت رکھتے تھے. اور نیچے دیے گئے جو ہمارے پاس گرافس ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح اوگرا نے جو بینچ مارک سیٹ کیے گئے ہیں لاسز کے لیے، لیکیجز کے لیے، ان کو کس طرح ایکسیڈ کیا جا رہا ہے ان سوئی یوٹیلیٹیز کے تھرو. سام. So those are the risks. Now I want to start to talk about recommendations in the short, medium, and long term. The problems are very complex. There's no simple answer, but the overall point is that the government must start to take steps now to ensure a more sustainable future. ابھی تک ہم نے رسکس دیکھے، اب ہم کچھ ریکمنڈیشنز کی طرف بڑھتے ہیں جن کو ہم نے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پہ ڈیوائڈ کیا ہے. اور ان سب سے ہمیں ایک جو ہمارا کی ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ابھی ایکشن لینا ہوگا تاکہ یہ جو فیوچر میں یہ جو ہم مالی بحران دیکھیں گے اس کو ہم پریونٹ کر سکیں. Well, the first recommendation is really to focus on energy demand, not supply. Rather than building out new LNG-fired power plants or new LNG terminals, the focus must be on using existing energy resources more efficiently. And some agencies in Pakistan expect that energy efficiency measures could save 10 to 15% of primary energy supply. Now, part of that promotion of energy efficiency runs in parallel to pro-poor tariff rationalization. A lot of end users, particularly fertilizer and residential, see no increase in gas costs, despite much more expensive gas being added to the network. And the average price paid by fertilizer and residences is still under about $2 per million BTU. And you compare that to the exorbitant price of LNG of about $30, and you can see a major financial discrepancy. شارٹ ٹرم کے اندر ہماری پہلی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سپلائی کے اوپر فوکس کیا جائے، جو پاکستان کی گورنمنٹ کا اب تک طریقہ رہا ہے، ہمیں دیکھا ہے کہ بہت سارے ٹرمینلز ایڈ کیے گئے ہیں، بہت پاور پلانٹس ایڈ کیے گئے، بجائے سپلائی سائڈ کو دیکھنے کے ہم ڈیمانڈ سائڈ کو دیکھیں، ہم انرجی ایفیشنسی کو اپنائیں. اور نیکا کے مطابق اگر ہم انرجی ایفیشنسی کو اپناتے ہیں تو 10 سے 15% پرائمری انرجی جو بنیادی ضرورت ہے انرجی کی پاکستان کی، وہ اس سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے. اور انرجی ایفیشنسی کو اپنانے کے لیے ایک یہ بھی ضروری ہے کہ جو ٹیرف ریشنلائزیشن ہے اس کو اپنایا جائے، یعنی کہ جتنے بھی سیکٹرز ہیں جہاں LNG کنزیوم ہو رہی ہے، جہاں گیس کنزیوم ہو رہی ہے، ان سب کو ایک ہی پرائس کا سامنا کرنا پڑے. اگر ہم گراف کو دیکھیں، جو رائٹ کے اوپر ہمارے گراف ہے ہم دیکھیں تو فرٹیلائزر سیکٹر اور ریزیڈینشیل سیکٹر جو ہے وہ $2 پر MMBTU تک پرائس پے کر رہا ہے، جبکہ جو اسپاٹ مارکیٹ کے اندر جو ہم نے ریسنٹلی ابھی پرائسز دیکھی ہیں وہ $30 پر MMBTU تک جا رہی ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سبسڈی دی جا رہی ہے ان سیکٹرز کو.
जिसकी वजह से उनके अंदर कोई इस वक्त ये रुझान नहीं है कि वो गैस को कंजर्व करें, गैस को बचाएं। तो इस एनर्जी एफिशिएंसी और गैस कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है कि टैरिफ रैशनलाइजेशन को भी अपनाया जाए। Second point. The second point is that there needs to be a change in the regulation of SWE utilities. They cannot be allowed to lose such high volumes of gas. That only inflates the need for more expensive imported LNG. हमारी दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि जो सुई यूटिलिटीज़ हैं इनको रेगुलेट किया जाए। ऑलरेडी जो है हमारी गवर्नमेंट वो इसके ऊपर काम कर रही है, बट क्लियरली इससे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गैस जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लीक हो रही है, लूज हो रही है, उसकी वजह से उतनी ही LNG की डिमांड बढ़ रही है। Over to you. A third point is that there needs to be a more optimal procurement strategy for LNG. You can't simply say we need one 30-year LNG supply contract. You need a portfolio of different contracts at different lengths, flexibility, pricing indexes, and that's going to reinforce national security and provide Pakistan with access to an array of different pricing options it can call upon. Another similar point is that procurement on the spot market can take up to 60 days in Pakistan. A lot can change in 60 days between prices and demand. There needs to be a more efficient process for procuring spot cargoes. कुछ हमारी जो LNG प्रोक्योरमेंट के अंदर जो हमने शॉर्टफॉल्स देखी हैं उनको भी सही करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि बजाय ये पाकिस्तान सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करे, यानी तवील मुद्दती कॉन्ट्रैक्ट्स करे, एक मिक्स्ड अप्रोच ली जाए, पोर्टफोलियो अप्रोच ली जाए, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हों, और इन कॉन्ट्रैक्ट्स की जो लीगल जो क्लॉजेज हैं वो भी डिफरेंट हो, फ्लेक्सिबिलिटी वो, डिफरेंट इंडेक्सेशन ऑप्शन हो। अभी पाकिस्तान ऑयल लिंक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पाकिस्तान के इस वक्त करंटली, गैस लिंक कॉन्ट्रैक्ट्स को भी देखा जा सकता है। और अगर जब हमारे पास इस तरह एक डाइवर्स पोर्टफोलियो होगा, डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, तो अगर एक ऑप्शन पाकिस्तान के लिए नहीं काम करी तो दूसरी ऑप्शन में भी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सके। इसके अलावा जो LNG जो स्पॉट मार्केट के ऊपर प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है वो बहुत तवील है, वो 60 दिन का प्रोसेस है। LNG के लिए टेंडर की एडवर्टाइजमेंट से लेके कार्गो की डिलीवरी तक 60 दिन का प्रोसेस है, जबकि स्पॉट मार्केट के अंदर जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो बहुत शॉर्ट बेसिस पे हो रही होती है। तो और जिसकी वजह से पाकिस्तान को कभी कभार बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस का सामना भी करना पड़ता है, या कभी डिमांड मैच नहीं करती। तो इस चीज़ को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। स्पॉट मार्केट के ऊपर प्रोक्योरमेंट को का जो टाइम पीरियड है उसको कम करने की ज़रूरत है। The last short-term recommendation is to maximize the use of existing infrastructure. One terminal, the Gasport terminal, has been used just less than half the time over the last 4 years. इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स हैं उनकी यूटिलिटी को बढ़ाने की भी ज़रूरत है। अगर हम गैसपोर्ट LNG टर्मिनल को देखें तो इसकी 50% से भी कम रही है यूटिलाइजेशन रेट पिछले 4 सालों के अंदर। तो बजाय इसके कि न्यू टर्मिनल्स हम लगा रहे हो, नए टर्मिनल्स लगा रहे हो, हमें जो एग्जिस्टिंग हमारे टर्मिनल्स हैं उनकी यूटिलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हम जो एक्स्ट्रा बर्डन हम फेस करेंगे नए टर्मिनल्स की सूरत में, हमें उसका सामना ना करना पड़े। Sam. In the medium term, the goal should be to reduce gas demand in the power sector by building out domestic, clean, renewable energy alternatives. And the growth of non-hydro renewables like wind and solar has really stalled in the country. And one mechanism to build out renewables is through competitive procurement auctions, which have been shown to lower prices throughout South and Southeast Asia.
मीडियम टर्म के अंदर हम देखें तो पावर सेक्टर क्योंकि एलएनजी का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है तो उसको टारगेट करना ज़रूरी है, वहाँ ऑल्टरनेट्स हमें ढूंढना और उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एक हमें आसान हल दिखता है रीन्यूएबल्स की सूरत में। अगर हम पिछले 10 सालों में भी देखें तो रीन्यूएबल्स हाइड्रो पावर के अलावा जो अगर हम वेरिएबल रिन्यूएबल्स की बात करें, सोलर, विंड एनर्जी और बायोमास, तो उनकी कैपेसिटी एडिशंस बहुत कम रही हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन कैपेसिटी एडिशंस को बढ़ाने के लिए जो रेगुलेटरी हर्डल्स हैं उनको ख़त्म करें। और इसका एक ज़रिया ऑक्शंस के थ्रू हो सकता है, कंपेटिटिव बिडिंग के थ्रू हो सकता है, जिसका मंसूबा इस वक्त हाल ही में गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया है और ये होने भी जा रहा है, लेकिन इसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। सैम? The long term, the goal should be to work on reducing gas demand in non-power sectors, fertilizer, industry, commercial businesses. This can be done through alternative domestic resources like biogas and green hydrogen. Biogas, Pakistan has huge potential of 600 to 1,200 million cubic feet per day. This is much more than it imports in terms of LNG from Qatar, and that can be done cheaply depending on the economies of scale. And then on the green hydrogen front, this is becoming much more attractive as renewable and electrolyzer costs decline. Early agreements in Pakistan for huge green hydrogen facilities suggest that prices would be very, very low. These may be optimistic in the near term, but the goal really should be to sustain investor interest in the long term. And to do that, the government can use fiscal policy and tariff measures to really start to lay the groundwork for future investment over the long term. लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम देखें, यानी कि आज से 10 से 15 साल के बाद अगर हम देखें तो एक जो है ज़रूरत जो हमें महसूस होती है वो ये है कि नॉन पावर सेक्टर्स, जहाँ जैसे कि रेजिडेंशियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर है, वहाँ एलएनजी की डिमांड को सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत है। और इसके लिए दो हमारे पास इस वक्त ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, बायोगैस और ग्रीन हाइड्रोजन। बायोगैस पाकिस्तान में अभी भी एग्जिस्ट करती है, बट उसको स्केल अप नहीं किया गया अनफॉर्चुनेटली। और क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ पे बायोगैस जिस मवाद से बनता है उसकी फराहमी काफ़ी ज़्यादा है। तो बायोगैस का पोटेंशियल इस वक्त पाकिस्तान में 600 से 1200 मिलियन क्यूसिक फीट पर डे है। और इसके मुकाबले में अगर हम कतर की एलएनजी इंपोर्ट्स ही देख लें तो वो 700 मिलियन क्यूसिक फीट पर डे हैं। तो एक सब्स्टिट्यूशन का केस बन सकता है। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बायोगैस की कॉस्ट इस वक्त $3 से $16 पर MMBTU एग्जिस्ट करती हैं, जो कि अभी भी अगर हम LNG इंपोर्ट से कंपेयर करें तो वो एक फीजिबिलिटी का केस बन जाता है। बट इसको अगर हम स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर हम यानी कि इसको बड़े पैमाने पर अगर हम लेके जाएं तो यकीनन ये जो कॉस्ट्स हैं ये और भी कम हो सकती हैं। दूसरी तरफ हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन है, जिसकी कॉस्ट भी करंटली तो इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो में इस वक्त फीजिबल शायद ना हो, लेकिन फ्यूचर में ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की कीमत कम हो रही है और इलेक्ट्रोलाइजर और इक्विपमेंट ग्रीन हाइड्रोजन को जो बनाने के लिए चाहिए उसकी कॉस्ट जैसे जैसे कम होती जा रही है, वैसे वैसे ये ज़्यादा फीजिबल बनता जाएगा। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऑलरेडी एक मंसूबा एग्जिस्ट कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, बट ये ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए कि ताकि फ्यूचर में ये चीज़ें अडॉप्ट की जा सकें। अभी ये ज़रूरी है कि अभी इनके लिए ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़े, इसके अंदर ऐसी पॉलिसीज़ फराहम की जाएँ, ऐसे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएँ जैसे कि टैक्स ब्रेक्स और जो रेगुलेटरी हर्डल्स हैं उनको कम किया जाए। तो ये सब ज़रूरी है कि ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर हम इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। उसके लिए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को अभी फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी इन ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ के लिए। सैम? Okay, so this last slide is a conclusion slide. I'm going to skip it for time reasons, but I'll just say thank you all so much for listening, and happy to take any questions over chat, or feel free to email us directly. So thank you again.
Thank you, everyone. अब हम move करेंगे towards our Q&A session. Now we'll be moving towards our Q&A session, which I'm going to be moderating. Let me just look at the questions we've got up till now. Okay. Okay, so we have a question from Ms. Shazia, who says, what is the alternative to LNG to fulfill energy needs? So I think we've discussed this through our presentation as well. We've got alternatives in the form of biogas, green hydrogen. Then in the short term, we've got different LNG procurement options and utilization of existing infrastructure. Sam, do you think there's anything you would want to add to this? Oh, we talked about some of the alternatives, and I just would like to say that it has to be a portfolio coherent strategy. It can't be one-off moves. It needs to have a plan in the short, medium, and long term. And that you may not be able, there may not be a way to address the problems tomorrow. There is no one-size-fits-all solution, but it's just more about laying the groundwork for financial and economic sustainability in the future. सैम का कहना है कि बहुत ज़रूरी है, मतलब ऑल्टरनेटिव के साथ बहुत ज़रूरी है कि एक पोर्टफोलियो अप्रोच ली जाए, जिसके अंदर हम ना सिर्फ शॉर्ट टर्म के अंदर जो हमारी एलएनजी की प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी है उसको देख रहे हों, बल्कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो हमें ऑल्टरनेटिव्स चाहिए उनके लिए भी एक फेवरेबल एनवायरनमेंट फराहम कर रहे हों. Our next question is that why did companies default 11 times and why were they not fined? And from where can Pakistan buy cheaper LNG? Yeah. So, we talked a little bit about what the financial incentive is or was for these companies to default. They defaulted at a time when international LNG prices were sky high. And under their contracts with Pakistan, they would only receive a much lower price. And so they defaulted potentially to receive higher profits in global markets elsewhere. Now, this is partly due to a flaw in the Pakistan contract. Penalties are only up to 30% of the original value of the contract. Typically in contracts elsewhere, they're about 100%. And so you don't see this kind of default happening very much elsewhere. But in general, when global prices are very volatile, that creates more contractual disputes between the buyer and the seller. And we've seen these in other countries as well. Bangladesh has had major disputes with its contracted suppliers and who have used flexibilities in the contract to minimize their deliveries to Bangladesh. And so you may not see the defaults in the same way, but you still see suppliers trying to minimize deliveries to buyers when international prices skyrocket. Now, as for where will cheaper LNG come from? Qatar is typically the lowest cost supplier, and I know Pakistan sources a lot of its LNG from Qatar. But the point is really to have a portfolio of different contracts from different suppliers elsewhere. So the United States, potentially you could see some low cost supply. One of the benefits of US LNG is not in terms of price necessarily, but in terms of gas on gas indexation. So the price of LNG is tied to the price of gas in the United States, whereas in the Qatar contracts, the price of gas is tied to oil. And this might give Pakistan more options in terms of responding to price spikes. So if the oil price spikes, for example, and Qatar's contract price goes way up, the US might be able to pull other cargoes from the United States. Creating this portfolio of contracts is important for LNG risk management, and it's something that Pakistan has not yet done quite well. So मैं इसको थोड़ा सा उर्दू में ट्रांसलेट कर दूं.
پاکستان جو کویشچن تھا وہ یہ تھا کہ کیوں سپلائرز نے 11 دفعہ ڈیفالٹ کیا اور پاکستان کہاں سے سستی LNG پروکیور کر سکتا ہے. تو جو ڈیفالٹس ہیں وہ اگر ہم جیسے کہ ہم نے دیکھا ان پریزنٹیشن میں دیکھا کہ وہ تب ہوئے ہیں جب انٹرنیشنل اسپاٹ مارکیٹ کی پرائسز زیادہ تھیں, اور اس وجہ سے جو سپلائرز ہیں ان کے پاس ایک انسینٹیو تھا ٹو ڈیفالٹ, یعنی کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں سپلائی کر دیں نہ کہ پاکستان کو سپلائی کرتے, اور جہاں انٹرنیشنل مارکیٹ میں انہوں نے جہاں بھی بیچے ہوں گے ان کو ہائر پروفٹ مارجنز ملے ہوں گے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کی جو لیگل کانٹریکٹس ہیں ان سپلائرس کے ساتھ وہ ویک ہیں. پاکستان کے کانٹریکٹس کے مطابق اگر کوئی سپلائر ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کو 30% پینلٹی پڑے گی, جبکہ باقی اگر ہم ممالک کے کانٹریکٹس کو دیکھیں تو اس کے اندر یہ پینلٹی 100% تک جاتی ہے. اور پاکستان کے کیس میں یہ پینلٹی ریئلائز بھی نہیں کی گئی, یعنی کہ پاکستان سپلائرز نے نہیں پے کیا یہ پینلٹی. انہوں نے کچھ لیگل کلازز انہوں نے انووک کیے, کچھ جیسے کہ فورس میجور اور اس طرح کی چیزیں کر کے انہوں نے یہ پینلٹیز نہیں پے کی. اور جہاں تک سوال ہے کہ پاکستان کہاں سے زیادہ سستی LNG چیپ LNG لے سکتا ہے, تو اگر ہم ایکسپورٹرز کو دیکھیں تو قطر کی گیس جو ہے وہ اس وقت سب سے چیپسٹ ہے, اور پاکستان آلریڈی ہی قطر سے بہت زیادہ گیس مطلب جو جتنے بھی لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں جو اب تک ہیں اس کے اندر میجورٹی جتنی کانٹریکٹڈ والیوم ہے وہ زیادہ تر قطر سے ہی آ رہا ہے. لیکن اس کا ایک حل یہ ہے کہ پاکستان ایک پورٹ فولیو اپروچ لے جس کے اندر جو سپلائرز ہیں وہ بھی مطلب ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, قطر ہو سکتا ہے, USA ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو LNG کے جو سپلائی کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ انڈیکسڈ ہوتے ہیں کسی بینچ مارک کے اگینسٹ. پاکستان کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ آئل پرائسز کے اگینسٹ انڈیکسڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ جو بھی عالمی جو بھی آئل کی پرائس چل رہی ہوگی مارکیٹ کے اندر اس کی ایک سرٹن پرسنٹیج ہوگی وہ LNG کی پرائس کو ڈکٹیٹ کرے گی. جبکہ US کے جیسے کہ ہم کانٹریکٹس دیکھیں تو وہ گیس سے لنکڈ ہوتے ہیں. تو یہ کہ اگر آئل کی پرائسز میں انٹرنیشنلی اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے تو ہم اس کو اوائڈ کرنے کے لیے گیس سے لنکڈ کانٹریکٹس بھی کر سکتے ہیں. So that was my translation of Sam's response. Now we'll move to the next question now, which has been asked by Mr. Sajid Hussain, and it says that how can we control leakage of gas in these SUI networks? Yeah, this is a very important question, especially as more LNG is added to the network. Really OGRA benchmarks of about 7 to 8% of allowable leakage rates are still 4 times what the international standards are. And we've seen in the past that OGRA has actually fluctuated on whether or not it's going to decrease these allowable rates. So in certain years, it'll go, the allowable rates will decrease, and then the next year they'll increase. And there's a correlation between what the rates are and what the allowable rates are and what SWE utility actual leakage rates are. So when the benchmarks decrease, the leakage rates tend to decrease as well. And when they increase, the leakage rates tend to increase as well. There needs to be a more long-term phase down of these allowable leakage rates from OGRA. I know this has been a major focus of the agency. It's a hotly debated topic among SWE companies, but more efforts must be made to form a strategy surrounding how to reduce those leakage benchmarks and bring them more in line with international standards. لیکیج کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک جو ہمارے پاس سامنے ایک ذریعہ وہ یہ ہے کہ جو اوگرا کی طرف سے جو بینچ مارکس دیے جاتے ہیں سو یوٹیلیٹیز کو جو پرسنٹیجز الاؤ کی جاتی ہیں ان لیکیجز کے لیے ان کو انٹرنیشنل نارمز کے ساتھ الائن کیا جائے.
जैसे कि जो ओगरा की तरफ से बेंचमार्क है वो हमने देखा है कि हिस्टोरिकली 7 से 11% रहा है, जबकि इंटरनेशनल बेंचमार्क 2% है, यानी 2% है। तो ये इसको ग्रेजुअली इस तरह करना होगा कि ये ग्रेजुअली कम होता जाए, और जैसे जैसे ये कम होगा उसी तरह सुई यूटिलिटीज की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी. So now we'll move to the next question, which has been asked by Shahira. She says that can Pakistan use financial derivatives to hedge against spot prices? Are they being used globally in the gas market? Yeah, this is a great question. They're not being used to a large extent, at least in newer emerging LNG importing countries. I have seen them used in gas exporting countries like Mexico. It takes a lot of financial capability as well as legal capability to be able to do this. One of the biggest dangers, though, about LNG prices in the global market is not just that they're high, but they're incredibly volatile, right? So during the COVID pandemic, prices dropped to well below $2 per million BTU, only to skyrocket to some of their highest levels ever following the winter of 2020 and into 2021. And so, the volatility is an aspect that makes hedging very, very risky and potentially even more harmful. I think it's something that could be explored more, but it would be risky given volatility. Yeah. So Sam, for people who are not familiar with what financial derivatives are, could you briefly explain that as well? I think that will be beneficial for our audience too. Yeah. Hedging would just be to lock in a future price of the LNG. So regardless of what the fluctuations are, you can fall back to that long-term hedge. Yeah. So जो सवाल किया गया था वो ये था कि कुछ इस तरह के फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स हैं जैसे कि हेजिंग, जिसके थ्रू बेसिकली ये होता है कि एक फ्यूचर प्राइस को लॉक कर लिया जाता है for the duration of the contract by the supplier and the buyer. तो ऐसे क्वेश्चन ये था कि ऐसे कोई मैकेनिज्म्स हैं जो यूज किए जा रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के अंदर. तो इसका जवाब जो सैम ने दिया वो ये है कि एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने शायद थोड़ा बहुत ये यूज किया जा रहा हो, बट इम्पोर्टिंग कंट्रीज ने अभी तक इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, जिसकी एक बुनियादी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा LNG मार्केट्स के अंदर प्राइस वॉलेटिलिटी है, यानी प्राइसेस के अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है. जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि $30 पर MMBTU हुआ है प्राइस, जबकि कोविड पेंडेमिक की वजह से 2 साल पहले ही ये प्राइस $2 पर MMBTU था. तो ये एक रिस्क भी होता है, अगर हम अभी लॉक इन कर लें प्राइस, कुछ के लिए ये फायदेमंद हो सकती है, कुछ के लिए नुकसानदेह हो सकती है, जिसकी वजह से इसका रिस्क बढ़ जाता है. सो इट्स अ रिस्की मूव इस तरह हेजिंग करना. ओके, all right, now we'll move to the next question. I think we have just about 5 more minutes. Is that right, Fiza? How much time do we have left for the Q&A session? I think, yes, 7 to 8 minutes we can take. Yeah. Okay. Yeah. And then you've got closing remarks as well. Yes. Okay, so I think we'll just take 2 more questions and then we can move towards the closing. Okay, so here's this question by Azhar Lashari. He's asking, do you think that Pakistan has potential to produce enough biogas to replace domestic natural gas and imported LNG? So Sam, do you want to answer? Should I go ahead? Hania, please. Yeah. Yeah, sure. So from what we've seen in the presentation so far, we've seen that Pakistan has a potential of about 600 to 1200 CFD, whereas our natural gas production is at least three times that, and then we're importing on top of that about 700 to 800 CFD. So I think while biogas could be
would be able to displace some of this demand. It would not be able to entirely meet the domestic natural gas production and imported LNG as well. So इसको अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर दूं तो ये है कि जो अभी जो रिसर्च के मुताबिक जो हमारे सामने आया है बायोगैस की जो पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, दैट्स अराउंड 600 to 1200 यानी 600 से 1200 मिलियन क्यूसिक फीट पर डे, जबकि जो हमारी डोमेस्टिक यानी कि हमारे कुदरती ज़खायर जो हैं उनसे जो हम गैस हमें आ रही है वो इससे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है, यानी 3000 से 4000 मिलियन क्यूसिक फीट पर डे। और उसके अलावा हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं अराउंड 700 से 800 मिलियन क्यूसिक फीट पर डे। तो बायोगैस एक ऑल्टरनेटिव है, मतलब थोड़ी सी डिमांड इसमें से डिस्प्लेस कर सकता है, कुछ हिस्सा कर सकता है, लेकिन शायद सारी ना कर पाए। उसके बायोगैस के अलावा भी हमें कुछ दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को भी देखना होगा। Okay, and then we have a question. Okay, we have a question from Mustafa who says, with Europe coming into the Asian spot market for LNG to diversify from Russian gas, it has driven up the costs of the spot market massively for developing countries like Pakistan. In such a situation, how likely is it that Pakistan in the short term could develop an affordable portfolio? So this is an excellent question. I think I've seen announcements from Pakistani government officials claiming that they want a 30-year long-term contract, right? At today's prices, locking in these prices for 30 years does not make much sense, in my opinion. Now, at the same time, contracting with a liquefaction supplier is not going to be possible. Pretty much all supply capacity is fully contracted until new supply facilities can come online in about 2026. The only potential people to contract with are the aggregators and the commodity traders, which are more used to doing 5, maybe 10-year contract terms. I think you would pay a slight premium to lock in these short-term contracts. However, in developing a larger portfolio, this could be one measure to move forward with locking in long-term contracts when prices are low, right? And to put some numbers on it, during the COVID pandemic, when prices were very low, long-term contracts were being signed at about 7 to 8% of Brent prices. Now, long-term contracts are at about 16% of Brent prices. So locking those in for 30 years doesn't necessarily make sense in a high-price spot market. I think for the near term, LNG is going to be expensive no matter what. But in terms of developing a portfolio, I think that more relationships can be made with aggregators and traders, at least in the near term. तो सवाल ये किया गया था कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो यूरोप है जो है यूरोप की प्रोक्यूरमेंट बहुत बढ़ गई है, क्योंकि वो रशियन गैस से डाइवेस्ट करना चाह रहे हैं और रशियन गैस से हट के अपनी सप्लाई लाना चाह रहे हैं एलएनजी और नेचुरल गैस के लिए। तो ऐसे में जो छोटी कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान जैसी, उनके लिए कितनी ये क्या पॉसिबिलिटी है कि वो एक पोर्टफोलियो अप्रोच, अफोर्डेबल पोर्टफोलियो अप्रोच को अपना सकें। तो सैम के मुताबिक ये कि जो पाकिस्तान, जो हमने अभी तक न्यूज़ में भी देखा है, पाकिस्तान का इस वक्त भी रुझान जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ है। अभी हाल ही में न्यूज़ में आया कि पाकिस्तान इस वक्त 30 साल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें इस वक्त करंटली, क्योंकि सप्लाई बहुत लिमिटेड है, बहुत कुछ चंद एक्सपोर्टर्स हैं जो बच गए हैं रशिया के अलावा, जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं, और उनकी भी जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज है वो मैक्सिमम है इस वक्त। तो इतनी ज़्यादा सप्लाई शायद मार्केट में ना हो,
اور اس کی وجہ سے ہی جو ہے لانگ ٹرم پرائسز جو ہیں وہ بہت ہائی ہوں گی اس وقت اگر کوئی کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے. جبکہ دیکھا جاتا ہے کہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2026 تک اور سپلائی آن لائن آ جائے گی اور جس کی وجہ سے جو ہے پرائسز وہ نیچے چلے جائیں گی. تو ایسے میں ایک شارٹ ٹرم کانٹریکٹ جو ہے وہ ایک زیادہ فیزیبل ایک اپروچ نظر آتی ہے. اور شارٹ ٹرم کانٹریکٹ کو سائن کرنے کے لیے جیسے کموڈیٹی ٹریڈرز ہیں اور اس طرح کے جو سپلائرز ہیں وہی اس طرح کے جو سپلائز کانٹریکٹس کو پاکستان کے ساتھ سائن کر سکتے ہیں. اس کے لیے شاید پاکستان کو ایک کچھ پریمیم ادا کرنا پڑے, لیکن یہ اس سچویشن سے بہتر ہوگا کہ پاکستان ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹ سائن کرے اور 30 سال کے لیے ایک ہائی پرائس فیس کرے. So I think Fiza, we've reached maybe the end of the time. We sort of run out of time for the Q&A session, or should we continue for a couple of more minutes? Yes, in fact, we are running really short of time, but I don't know. I mean, I think we should wrap up. Should we wrap up? Yeah, Okay, yeah. then I'll just hand over to you, Fiza. Thank you so much, everyone, for the questions, and thank you, Sam, for providing those answers. Over to you, Fiza, for the Thank you closing. very much. Thanks a lot. It was really a wonderful presentation. Thanks a lot, Sam. And thanks a lot, Hania, for wonderful translation along with and managing the Q&A session. Now we are moving towards our concluding session. And for concluding remarks and vote of thanks, I would like to invite Mr. Asim Jafri, Program Lead, Fair Finance Pakistan Indus Consortium. Over to you, Asim. Thank you. Thank you very much, Fiza. بہت بہت شکریہ تمام حاضرین کا کہ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ایک میننگ فل ڈسکشن کو جو ہے وہ کمپریہینڈ کیا اور ایک نئے عزم کے ساتھ کہ ہم پاکستان کے جو انرجی کے جو کرائسس ہے اس کے اندر جو LNG کا اسپیکٹ ہے اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کر سکیں. اور ایفا جیسے ادارے جس میں سیم, ہانیہ جیسے گریٹ ریسرچر جنہوں نے اتنی ایفرٹ کر جو ہے ہمیں LNG کی اکنامکس کے اوپر جو ہے ایک اورینٹیشن دی. گلوبلی جو ماسکو یوکرین وار ہے وہ نہ صرف پاکستان جیسے غریب ممالک کو ہرٹ کر رہی ہے بلکہ گلوبلی اس کا امپیکٹ دیکھنے میں آ رہا ہے. جو جیسے سیم نے بھی کہا کہ ابھی جو ہے گروئنگ جو پرائس ہائک ہے وہ انکنٹرولیبل اور پاکستان کے کسی بھی طرح 30 ایئر کا کانٹریکٹ فیوریبل نہیں ہے کیونکہ وہ پرائسز ول چینج. اسی طرح سے جو بایو گیس کا جو پوٹینشیل ہے وہ ایز اے ریکمنڈیشن جو ہے بایو گیس اور گرین ہائیڈروجن ان دونوں کا جو پوٹینشیل ہے وہ پالیسی میکرز کے لیے ایک اوپن لیسن ہے کہ اگر وہ اس طرح کی جو آلٹرنیٹس ہیں یا سبسٹیوٹس جو کیس ہے اس کو اگر وہ کنسیڈریشن میں رکھتے ہیں تو پالیسی کین بی فلیکسیبل اور اس کی آپشنس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کتنا اکنامکلی کنوینئنٹ ہو سکتا ہے. اور سیم کی جو ریکمنڈیشن میں پورٹ فولیو کوہیرنٹ اسٹریٹجی کی جس طرح اس نے کہا کہ اونلی وے فارورڈ, تو آئی بلیو کہ سول سوسائٹی کے لیے از اے نیو نیش کہ ہم اس کی جو پورٹ فولیو جو کوہیرنٹ اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر کیمپیننگ کریں. اور یہ رپورٹ لانچ کرنے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایویڈنس کو پرووائڈ کیا جائے ٹو دا سول سوسائٹی. گرین گرو نیٹ ورک کے لیے ایک پوٹینشیل پچ ہے ٹو ہیو اے کنورزیشن ود پالیسی میکرز کہ ہم اس کی جو انرجی کا جو پورٹ فولیو اس کے اوپر ڈیبیٹ کو ریز کر سکیں. پھر اس کے ساتھ جو بات ہوئی کہ LNG کے رسک مینجمنٹ جو ہے وہ پالیسی لیول پہ ڈیبیٹ کو بڑھانا چاہیے اور جو نیٹ ورک کی جو کولیشن کی جو آرگنائزیشن ہے ان کی یہ اپروچ کے ٹورڈز پاکستان کے پالیسی کوریڈورز کے اندر اس ڈیبیٹ کو لے کے جایا جائے اور پالیسی میکر سے بات کی جائے, لیجسلیٹر سے بات کی جائے کہ یہ کسی بھی طرح سے بزنس کیس نہیں ہے پاکستان میں, کیونکہ الٹیمیٹلی
इसका बर्डन जो है वो सिटीजन्स ने उसकी प्राइस को पे करके उठाना है। तो जिस तरह हानिया ने भी जिक्र किया कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो वेल निगोशिएटेड नहीं थे। जिस तरह अगर उसकी अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो 30% पे करना है, पाकिस्तान ने आई बिलीव कि उनका ये कहना था कि 30% भी उन्होंने नहीं लिया, और इंटरनेशनल मार्केट में 100% जो है वो उसकी प्राइस पे बैक है इफ दे डिफॉल्ट। तो इस तरह की जो क्राइसिस हैं, एक एंड पे नजर आता है कि पॉलिसी मेकर्स के कुछ इंटरेस्ट या स्टेक ऐसे थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स को वेल निगोशिएट नहीं कर सके, और दूसरी तरफ जो है यूक्रेन मॉस्को की वॉर जो है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो सप्लाई के ऊपर नजर आता है कि वो एक कंडीशनिंग आ रही है। सो ओवरऑल जो है हम देखते हैं कि LNG का जो डिपेंडेंसी है उसके लिए जो स्ट्रेटजी सैम ने दिया कि डिपेंडेंसी ऑन द लोकल डिमांड के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा और अदर ऑप्शन सब्स्टिट्यूट की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये क्वाइट एविडेंसेस हैं कि हम जो है इस डिबेट को जो है पॉलिसी लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो आई विल पे थैंक्स टू ऑल ऑफ द participants and special thanks to Sam and Hania who have contributed a lot. And I pay thanks to the management of the Indus Consortium, Hussein and Fizza especially, who organize these events and regularly and give us the updates about the ongoing situation and make us relevant to the situation. And thank you very much once again. And I pay full of the acknowledgement to all of the participants. Thank you very much. Thank you very much, Asim, and सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। Thanks Grow Green Network, Recoalition members, Alliance for Climate Justice and Clean Energy ACJCE members, Sam, Hania for wonderful presentation once again, and Asim and Hussein, though they have managed wonderfully from abroad, and Mushtaq Gadi Sahab and Indus Consortium's board members. Thank you very much all, and take care of yourself. Thank you. तस्वीर फिजा एक अगर पिक्चर हो जाए अगर एक सारे साथी अपने वीडियोस अगर सारे साथी जो है वो अपने वीडियोस ऑन करें फॉर ग्रुप फोटो। Please turn on your videos for the group photo. Thank you. समझो आना सीधी तरह अटेंडेंस है। जी बिल्कुल। नए जमाने की अटेंडेंस है लिसन। Turn on your videos. Thank you. ये आपने हमारा बंद किया हुआ है मैम कैमरा। ये आप कैमरा खोल दें, ओपन कर दें कैमरा। जी कर देते सदाकत हाँ हमजा सदाकत। थैंक यू जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं तस्वीर 1 2 3 प्लीज स्माइल। Thank you, it's done. Thank you. Thank you. बहुत शुक्रिया। बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you, Sam. Thank you.